Sadhana ji, Mr. Narona, all colleagues from the ministry, friends. Today is the 60th edition of this India 2016, for which we have gathered here. This has almost become a signature book of the DPD, one of important reference books for, especially for students preparing for the various competitive examinations and even for academia. I congratulate Sadhana ji and her team for having brought it out. And also, sir, after the approval which was accorded recently for the entire restructuring of DPD, now a whole lot of publications of DPD would also be available online, for which the detailing will be done just now, and we will make a request to you to start that also. In fact, having interacted a lot with the DPD team in the last couple of months, I find most of them are, in fact, all of them are exceptionally creative under the tutelage of the Director Sadhana ji, and I'm sure they will keep up the good work. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद सुनील अरोड़ा जी। और अब हम निवेदन करेंगे माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली जी से कि सबसे पहले वार्षिक संदर्भ पुस्तकें भारत 2016 और इंडिया 2016 जो पिछले 60 साल से प्रामाणिक, सही और व्यापक सूचनाओं के लिए जानी जाती हैं, उनका लोकार्पण करें। हम अपने बाकी विशिष्ट अतिथियों से भी यही निवेदन करेंगे कि इस लोकार्पण में शामिल हों और दोनों पुस्तकें सामने प्रदर्शित करें। भारत 2016 और इंडिया 2016 सामने सभी के लिए प्रदर्शित करें हमारे सभी विशिष्ट अतिथि। और ये लोकार्पण इस नई नवेली पुस्तक का जो पिछले 60 सालों से प्रकाशित हो रही है, और एक बार फिर से ये पुस्तक अपने संदर्भों के साथ आपके समक्ष हाजिर है। हमें उम्मीद है कि आप सभी इन पुस्तकों का लाभ उठाएंगे। और इस साल प्रिंटेड भारत 2016 और इंडिया 2016 के साथ साथ ई बुक संस्करण भी बनकर तैयार हैं। हम निवेदन करेंगे माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री अरुण जेटली जी से कि ई बुक संस्करणों का भी यहां पर विधिवत लोकार्पण करें। कोबो इंडिया प्लेटफॉर्म पर आप जा सकते हैं और इन ई बुक्स को खरीद सकते हैं। इन ई बुक्स को आप आसानी से अपने आईपैड, आईफोन, एंड्रॉयड टैबलेट या फिर एंड्रॉयड फ़ोन्स पर या अन्य किसी भी डिवाइस पर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ई पब्लिशिंग के उच्च स्तरीय मानकों के अनुरूप इनमें तमाम फीचर्स हैं। पाठ्य सामग्री को आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ चाहें तो छोटा बड़ा हो सकता है, और किसी भी सूचना को आप सोशल मीडिया पर भी शेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंडिया 2016 और भारत 2016 के साथ साथ प्रकाशन विभाग ने अपनी कुछ अन्य महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पुस्तकों को अब डिजिटाइज किया है। इन ई बुक्स को भी आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म kobo.com पर जाकर खरीद सकते हैं। एक कदम और आगे बढ़ाते हुए प्रकाशन विभाग की मुद्रित पुस्तकें अब ऑनलाइन बिक्री के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। अब इन्हें आप फ्लिपकार्ट पर जाकर ऑनलाइन खरीद सकते हैं। हम निवेदन करेंगे माननीय अरुण जेटली जी से कि इस सुविधा का भी विधिवत यहां पर शुभारंभ करें। फ्लिपकार्ट के साथ प्रकाशन विभाग द्वारा पहली बार इस साझेदारी के द्वारा अब मुद्रित पुस्तकें आप फ्लिपकार्ट के जरिए खरीद सकते हैं। अब हम चलेंगे अपनी अगली पहल पर। प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित जर्नल्स यानी कि पत्रिकाएं योजना, कुरुक्षेत्र, बाल भारती, आजकल को भी अब आप ऑनलाइन खरीद पाएंगे। हम अनुरोध करेंगे एक बार फिर से जेटली जी से कि इस सुविधा का भी शुभारंभ करें। वित्त मंत्रालय के भारत कोष पोर्टल पर आप ऑनलाइन पेमेंट के जरिए इन पत्रिकाओं को आराम से खरीद सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैश की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन आप जा सकते हैं और इन पत्रिकाओं को ले सकते हैं।
और प्रकाशन विभाग के लोकप्रिय समाचार पत्र एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ आप सब जानते हैं, डिजिटल वर्जन उसका तैयार है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का प्रिंट और ई पेपर भी अब आप ऑनलाइन सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आग्रह करेंगे एक बार फिर से माननीय मंत्री जी का कि इस सुविधा का भी आज शुभारंभ करें। तो ये तमाम पहले आपके समक्ष प्रकाशन विभाग की ओर से वक्त की ज़रूरतों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए ये पुस्तकों का पूरा संस्कार और उनका ई वर्जन आपके समक्ष है। आप इसका लाभ उठाइए। और अब हम निवेदन करेंगे सूचना और प्रसारण मंत्री माननीय अरुण जेटली जी से कि वो हमें संबोधित करते हुए हमारा मार्गदर्शन करें। Mr. Sunil Arora, Secretary of the Ministry of Information and Broadcasting, the Special Secretary Mr. Mathur, Mrs. Raut, other officials and friends. Though it's a formal event every year, this year it becomes a little more than formal when we launch India 2016 in its English and Hindi version, also in the e-version. I say this because of the reorganization of the Directorate. Its activities have increased manyfold. A few months ago, at a function, we had a complete the complete works of Gandhiji in the e-version, which was launched. Now, conventionally, we've had almost 100 volumes of that work, and today it's only available in the e-version, so it's globally available almost to everybody with ease. And therefore, along with the India 2016 in English and Hindi, the e-version is also being simultaneously released. The e-version is going to be cheaper. It's going to be priced at 75% of the cost of the hard copy. You won't need space to store it, because storage also these days is a problem. And probably we'll end up saving a lot of paper. I feel the kind of details that India 2016 carries is a must read for everyone, and particularly for journalists and politicians. I think it's very necessary, because while being in ignorance of a large number of facts which are contained here, we can't indefinitely live under the impression that we know most of the things, because once you go through these books, you realize how much we don't know. I think to my colleagues in Parliament, it will be of a great use. Obviously, to students, I think they are a natural constituency of this. Those appearing for the competitive examinations ordinarily buy it, because lakhs of copies of the India book are sold every year. And I'm particularly delighted because most of the publications and journals, one by one, are now going on to the e-version. Day before yesterday, another important advance that we made was that when you buy this, the money directly gets credited immediately to the Consolidated Fund of India. And that also, on the Controller General of Accounts, there is an e-portal now. And so within minutes of your buying it, even one copy, it gets transferred to the Consolidated Fund of India. So there are no registers, no physical transfers taking place. So I think technology has made life easier for all of us. The object of technology is to
provide solutions to complicated issues. And this is one solution which has been provided. I am sure that this will be in either form, physical, hard copy or electronic form, will be a great asset to every home in India. And we must start this culture of encouraging people to keep abreast with what's happening in the country and elsewhere. I compliment the Directorate for this great effort and a very timely effort, and I'm sure this book will be extremely useful to all of us. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपके मार्गदर्शन के लिए। और आप जैसे कि जानते हैं, आज के कार्यक्रम को संभव बनाने के लिए बहुत से लोगों का सहयोग और मार्गदर्शन मिला है। उन्हीं के प्रति अपना आभार प्रकट करने के लिए प्रकाशन विभाग की प्रमुख डॉक्टर साधना राउत। Honorable Minister of Information and Broadcasting Shri Arun Jaitley ji, Secretary Information and Broadcasting Shri Sunil Arora ji, other dignitaries on the dais, heads of media units and other colleagues, officials of the ministry and friends from media, ladies and gentlemen. On behalf of the Publication Division, it is my honor and privilege to thank Honorable Minister Jaitley Sahab, who, despite his extremely heavy preoccupation relating to the forthcoming budget, has joined us today. Sir, your abiding interest for books and publication, irrespective of the rise of alternative mediums, we at Publication Division have always received your special affection and counsel. Launch of our reference annuals and other new services in your hands today is an inspiration as ever. Grateful, sir. Our sincere and heartfelt thanks to Secretary INB, who has led the India 2016 project along with several other initiatives with his personal interest from start to finish, and gave us significant support in all our recent initiatives. I thank the Joint Secretary PNA in the Ministry and his team for extending necessary approvals. New Media Wing of the Ministry worked closely with us through this project for compiling all necessary information for India and Bharat. I compliment the contribution of its head, Shri L.R. Vishwanath and his team. There are several distinguished partners and stakeholders in fulfilling the rather ambitious projects that we have been able to start today. Some of them are present here and some are not, but without their lending full-hearted support, often working overtime, things would not have been possible today. We are grateful to the CGA and his team from the Ministry of Finance, especially Shri G.P. Gupta, Additional CGA, and Joint CGA Sophia Dahiya ji, for working alongside officers from Publication Division for months together to set up the e-sales and e-payments through their portal. CCA of our ministry, Shri Vinod Chaube, extended full support in this paradigm shift. My sincere and heartfelt thanks to e-commerce agencies Kobo and Flipkart and our digitization partner Prachi India, whose representatives have joined us today. I thank friends from the media for being here, who I am sure would spread a word about the new products and services of Publication Division so that people can avail of them. I wish to thank senior officers of the ministry, heads of media units and other colleagues for their gracious presence in this event. Special thanks to DAVP, PIB, Doordarshan News and AIR News for the coverage. Last and quite important, sir, is to note the rigorous work put in by my very small team of colleagues in Publication Division, without which this day would not have been possible. I must record my appreciation specially for Directors Dharini Mishra,
Deepika Kachal and Pushpinder Kaur, besides other colleagues Vinod Meena, Manjula, Anil Srivastava, Sanjeev Kumar, Roma, Remi, Rakesh Renu, Ashutosh, Leela, Maruf, Faruqi, Surikant, Arun Paul and others. Privileged to have you all as colleagues. Thank you once again, Honorable Minister, and all of you, for being part of this occasion. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अंक अब आपके हाथों में है और इसका ई वर्जन भी आपके समक्ष है। उम्मीद है इसका लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पधारने के लिए। शुक्रिया।